Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor in Hindi, Manoj Pathak. नमस्कार। मार्केट मंत्र के ताजा अंक में आपका स्वागत है। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हम देश और दुनिया की चुनी हुई कारोबारी, आर्थिक और शेयर बाजार से संबंधित ताजा खबरों को लेकर हाजिर हैं। हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए ऑनलाइन आमंत्रित हैं देश के जाने माने वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पुनीत जैन। पुनीत जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद मनोज। आइए शुरुआत करते हैं अंग्रेजी में हेडलाइन से, जिसे लेकर मौजूद हैं अर्जुन चौधरी। At the stock market, Sensex erases all its gains to end 137 points lower. Nifty loses 26 points. Rupee weakens by 4 paise against the US dollar. State Bank of India's quarterly net profit jumps 41% to 9,114 crore rupees. And country's merchandise exports rise nearly 31% in April. Trade deficit widens to over $20 billion. शुरुआती तेजी गंवाकर घाटे के साथ बंद हुए प्रमुख सूचकांक। सेंसेक्स 137 अंक लौटका, निफ्टी 26 अंक नीचे आया। $1 की तुलना में रुपया हुआ 4 पैसे कमजोर। भारतीय स्टेट बैंक का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में 41% बढ़कर 9,114 करोड़ रुपए पर पहुंचा और देश का वाणिज्यिक निर्यात अप्रैल में इस वर्ष लगभग 31% बढ़ा। व्यापार घाटा बढ़कर इस दौरान $20 अरब से ऊपर हुआ। घरेलू शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली, लेकिन दोपहर बाद हुई बिकवाली से प्रमुख सूचकांक घाटे के साथ बंद हुए। हालांकि छोटी और मझोली कंपनियों की रौनक बनी रही। कारोबार के अंत में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 137 अंक यानी 0.3% घटकर 52,794 बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 26 अंक यानी 0.2% घटकर 15,702 दर्ज हुआ। विस्तृत बाजार की ओर चलें तो छोटी और मझोली कंपनियों के शेयरों की लिवाली निवेशकों ने अच्छी खासी की। सेंसेक्स और निफ्टी पैक की तुलना में इनका प्रदर्शन बेहतर रहा। बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.8% लाभ में रहा। स्मॉल कैप इंडेक्स में 1.3% की वृद्धि हुई। At the stock markets, erasing all its solid gains in the last hour trade, Sensex at the BSE ended 137 points, or 0.3% lower at 52,794 points today. Nifty at the NSE shed 26 points, or 0.2% to 15,702. But the broader market outperformed the Sensex, with the BSE mid-cap index rising 0.8% and the small-cap index climbing 1.3%. The market breadth on the BSE was, however, positive, with almost 3 advancing stocks for every single loser. Among the sectoral indices on the BSE, the auto index was the biggest gainer, jumping 2.5%. The industrials index advanced 1.7%. FMCG index added 1.6%. Healthcare index climbed 1.5%. Consumer durables index rose 1.4%. Consumer discretionary index gained 1.2%. Capital goods index ended 0.8% higher. Energy index moved up 0.7% and the oil and gas index rose 0.5%. Among the declining indices, the metal index was the biggest loser, slumping 2.5%. The utilities index slipped 2.4%. Telecom index slid 2.3%. Power index declined 2.2%. BankX dropped 1.3%. Basic materials index lost 1.1%. Finance index fell 0.9%. Tech index shed 0.5%. And the IT index ended marginally lower. नजर डालते हैं रुपए की स्थिति पर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया 4 पैसे कमजोर हुआ, 77 रुपए 45 पैसे पर बंद हुआ। And looking at the latest action from SBI, State Bank of India, SBI has reported over 41% year-on-year jump in standalone net profit to 9,114 crore rupees for the fourth quarter of the last fiscal. The board of State Bank of India has approved a dividend of 7 rupees and 10 paise per share. The record date for the dividend is May 26. The bank said its provisions for bad loans came down to nearly a third of what it provisioned a year ago. It kept aside 3,262 crore rupees during the fourth quarter compared to 9,914 crore rupees in the same quarter last year.
SBI's net NPA stood at 1.02% in the fourth quarter compared to 1.5% last year. The loan book clocked a growth of 11% year-on-year. Of this, retail loans grew at over 15%, while corporate loans increased 6.4%. कॉरपोरेट जगत से कुछ और खबरें। बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में शुद्ध लाभ बढ़कर 1,789 करोड़ रुपए पर पहुंचने की खबर दी है। इससे पिछले वर्ष बैंक को इसी अवधि में 1,046 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ था। बैंक के निदेशक मंडल ने प्रति शेयर ₹1.20 लाभांश देने की मंजूरी दी है। टेक महिंद्रा आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनी टेक महिंद्रा का शुद्ध लाभ पिछले वर्ष की चौथी तिमाही में 39% बढ़ा 1,506 करोड़ रुपए से अधिक हो गया। कंपनी का राजस्व इस दौरान 24.5% बढ़कर 12,116 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया। पुनीत जी, पहले तो हम बाजार में आज की गतिविधि पर आपकी प्रतिक्रिया समझना चाहेंगे। कारोबारी सप्ताह का आखिरी दिवस आज शुरुआती दौर में अच्छी खासी यानी मोमेंटम था बाजार में और लग रहा था कि बाजार में तेजी है, लेकिन अंततः यह घाटे के साथ बंद हुआ। क्या कारण रहे? Puneet ji, I hope you can hear us online as we ask you this question. Yes, sir. So, basically, Manoj ji, जो बाजार में आज हमने देखा कि जब शुरुआती दौर हुआ तो बाजार में एक अच्छी तेजी थी और उसका मुख्य कारण ये था कि पिछले कुछ सत्रों से हम देख रहे थे कि बाजार में काफी गिरावट थी और एक टेक्निकल रिबाउंड मार्केट में हमने देखा। लेकिन जो बाद का लास्ट का 1 आवर था उसमें हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी। हमने देखा कि काफी ज्यादा फिर बिकवाली आई और बाजार में गिरावट रही। यदि हम पूरे सप्ताह को देखें तो ये 5th वीक इन अ रो है, लगातार 5वां सप्ताह है जब मार्केट में गिरावट रही है और करीब 15% इंडेक्स ऊपर से पिछले 5 सप्ताह में बाजार में हमने गिरावट देखी है और ये पिछले 2 वर्षों में यानी अप्रैल 2020 के बाद ये सबसे बड़ी गिरावट है बाजारों में। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मार्केट्स में हम करेक्शन देख रहे हैं अभी वो काफी गहरी है और अब की बार काफी सिग्निफिकेंट है। तो मुझे लगता है कि ये आप उसको ऐसा मान सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल है। जो तेजी चल रही थी बाजारों में उसमें काफी सिग्निफिकेंट एक फॉल रहा है। आने वाले कुछ समय में डेफिनेटली हम एक रिबाउंड जरूर देख सकते हैं, टेक्निकल रिबाउंड यहाँ से आ सकता है, लेकिन जो चिंताएं बनी हुई है इकोनॉमी को लेकर, इन्फ्लेशन को लेकर, मेरा अनुमान है कि अभी बाजारों में जो सेंटिमेंट है वो कमजोर रहेगा। आने वाले कम से कम 2 या 3 महीने ऐसा हो सकता है कि हम ये मार्केट जो है वो थोड़ी नर्वस रहे और उसके बाद शायद जब थोड़ा सा इकोनॉमिक ग्रोथ स्टेबलाइज होगी या चिंताएं इन्फ्लेशन को लेकर कम होंगी तब भी बाजार में थोड़ी शायद फिर वहां से हम कुछ रिकवरी देख सकते हैं। Puneet, you're right about the trend. The FIIs are once again net sellers today. 3,780 crore rupees as net sellers provisionally in the equity markets today. But what we saw with State Bank of India, which we can state as a bellwether stock and has a weightage of 2.53% on the Sensex and has 11.27% weightage on the Bank Nifty, that fell by almost 5% in today's trade in the cash market. Do you see that as one of the contributing factors to the correction by 137 points in the Sensex? And what does this mean for the market? Has it bottomed out? What will it show when the market reopens on Monday? So one thing is that the SBI results today were quite good. In fact, the bank has declared a dividend of 7 rupees, more than 7 rupees. And overall performance, if you mentioned results by Bank of Baroda, look at results from Canara Bank, Union Bank of India, which came today, they're all very impressive. And more than the fact that these banks are reporting good profits, healthy profits, they're also reporting the fact that the corporate sector loans, they have turned around. There's growth in corporate sector loans, which signifies economic recovery in the corporate world. It also shows that the NPA cycle, which was hurting profits very badly for banks, that NPA cycle is now over and no more significant NPAs are being added to bank books. So I don't think today's fall in SBI should be attributed to any fundamental long-term reasons.
I think it was more like profit booking. People expected SBI to come out with good results, and after results were announced, actually the stock went up a little bit, and then it fell on profit booking. So I don't attach much significance to it, but you're right. Today's fall in the market was actually led by the bank Nifty, and not just SBI, the other banks also saw some selling, and we saw there was a retreat in those banking stocks. But I think long-term banking stocks should be okay given the fundamentals. A broader market, there were other contributors, like there was a metal index which went down today a lot, and some other sectors was also not pulling along. So my own sense is that the markets are right now nervous about economic growth going forward, and we are seeing more of profit booking, or you can say safe haven selling by some investors. They want to take money off the table and wait on the sidelines. Now, having seen a very long streak of losses for 5 weeks, as I said earlier, my own expectation is that markets will see some kind of a bounce back in next couple of weeks. We could see a bounce back on Monday itself. We could see a bounce back sometime Tuesday and Wednesday. But I think we should see some recovery. We have seen the index Nifty, for instance, fall by more than 2,000 points in last 5 weeks. I think there will be some kind of a technical rebound in the coming days. पुनीत जी, आपने ये बिल्कुल सही पकड़ा है कि जो बाजार है वो जो कंपनियों के परिणाम आ रहे हैं, खासतौर से बैंकिंग सेक्टर के जो परिणाम आए हैं, उसके अलावा अन्य कंपनियों के भी जो परिणाम आए हैं, वो उम्मीद जगाते हैं कि उनका जो प्रदर्शन है, उनका जो लाभ है, वो बढ़ा है प्रमुख कंपनियों के। ऐसे में जो तात्कालिक गिरावट है पिछले 4-5 सप्ताहों की शेयर बाजार की, उसे हम वैश्विक परिस्थितियों का दबाव माने या आंतरिक कारक माने, क्योंकि कंपनियों के जो परिणाम है वो अपेक्षाकृत कुछ दूसरी कहानी भी कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप ज्यादातर तो मैं ये कहूंगा कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, जो वो ज्यादा भी हावी हैं बाजार के सेंटीमेंट पर, रादर देन परफॉर्मेंस ऑफ कंपनीज। यदि हम सब क्षेत्रों की देखें फिगर्स, स्टील क्षेत्र के रिजल्ट आए बहुत अच्छे आए हैं, उसके बावजूद हमने थोड़ी गिरावट देखी। बैंकिंग क्षेत्र के रिजल्ट की हम बात कर ही रहे हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि जैसे टाटा मोटर्स के रिजल्ट, जो कि हालांकि उसमें लॉस आया कल, लेकिन उसके भी रिजल्ट उम्मीद से बेहतर थे। तो काफी हद तक मेरा अपना मानना यह है कि जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं और जो फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग है, वो अभी ज्यादा हावी है, ज्यादा इंपॉर्टेंट कारण है बाजार की गिरावट में। पर आने वाले समय में जब मेरा अपनी उम्मीद है कि ये एफआईआई की सेलिंग में थोड़ी रुकावट आएगी, अब थोड़ा उसमें थोड़ा स्लो डाउन रहेगा आने वाले टाइम में, तभी ये बाजारों में रिकवरी हम देखेंगे। डोमेस्टिक इनफ्लोज की हम बात करें तो म्यूचुअल फंड्स में पिछले महीने भी अप्रैल का जो डेटा आया है वो भी अच्छा है, मतलब 14 से 15 हजार करोड़ रुपए की इनफ्लोज रहा है म्यूचुअल फंड्स में। तो वहां कोई बहुत बड़ी गिरावट हम नहीं देख रहे, डेफिनेटली कुछ स्लो डाउन है। तो डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट एनवायरनमेंट तो ठीक है, बट फॉरेन इन्वेस्टर्स की सेलिंग ज्यादा बड़ा कारण है अभी गिरावट के लिए। Puneet, this flight of foreign capital from our markets, the FIIs and FPIs, to what extent is that hurting the exchange rate of the rupee to the dollar? It weakened by 4 paise against the dollar, but it's still struggling to hold on to that 77.5 mark against the US dollar. What is the RBI intervention here, and how do you see the rupee once again regaining its strength next week? So, rupee's fall is, of course, a matter of concern, but it has not fallen significantly. In fact, if you compare it to other emerging market currencies and other currencies, in fact, not just emerging market currencies, rupee has done very well. If you look at the euro is almost now equal to $1 US, which is surprising because it used to be 1.25, 1.3 at one point of time, and then 1.15 it stayed for quite a long time. And right now, euro and US dollar are almost at par. It is 1.05 or 1.04 dollar to the euro. So you can imagine that all currencies across the world have seen a significant fall vis-a-vis the US dollar. Indian rupee, of course, has seen some fall. We are lucky to have very large foreign exchange reserves, almost $600 billion, and so RBI has enough firepower to defend the rupee if it wants to. Although I don't see any economic logic in defending any level of the rupee. RBI just wants it to be smooth and stable rather than trying to determine any level of the rupee. But if you recall other similar incidents in 2013 when there was a Chinese crisis and we saw the currencies fall, the rupee at that time had fallen by more than 10% because of international reasons.
I think the fall this time has been very reasonable. We are just about 4-5% down in last 1 year. So I'm not really worried about the rupee, if you ask me. I think rupee has been quite stable. Internationally, US dollar has now, the dollar index has reached almost 105. So ultimately, it has to stop somewhere because it will otherwise hurt the US economy a lot. So my own sense is that rupee, we have seen the worst of the fall in the rupee's exchange rate vis-a-vis the dollar. It should stabilize around current levels. And you also have the country's merchandise exports going up by 31% for the month of April. But the trade deficit has widened to $20 billion. What are your comments about that when you look at the exchange rate of the rupee? Earlier I asked you about the FI role in the rupee valuation, but now we're looking at the import-exports impact on the rupee. So clearly, there are three factors which actually determine the value of the rupee vis-a-vis the dollar. One is, of course, capital flows that we spoke about, which is FIIs and FPI flows. Second is the trade figures, how much export or import we have, or the trade deficit. And third, of course, is the invisibles, which software exports, etc., which determine the exchange rate. So on trade front, we are doing very well in exports actually. Merchandise exports, we have done very well. Last year we did more than $400 billion, which are record exports. However, we are getting hurt by very sharp rise in oil prices. And India, of course, imports almost its entire requirement of crude oil, and I think that is what is really hurting the sentiment and also our trade deficit figures, because oil imports would be counted as imports of merchandise and goods, and therefore hurting our trade deficit. I don't think there is much that we can do about it. I mean, we just have to live with this world where oil is again at $110 a barrel. So for some time, I think we'll have to put up with this large trade deficit, largely driven by oil imports. And gradually, hopefully, we will see oil prices come down and then these figures will improve. हमने आयात निर्यात पर भी चर्चा की, तो श्रोताओं को हम इससे संबंधित आंकड़े देना चाहेंगे। देश का वाणिज्यिक निर्यात अप्रैल महीने में लगभग 31% बढ़ा, 40 अरब 20 करोड़ डॉलर से ऊपर पहुंच गया, जबकि सेवा सहित सकल निर्यात में अप्रैल महीना एक नई ऊंचाई को देख रहा है। इस दौरान आयात में भी पिछले वर्ष की तुलना में 39% की वृद्धि हुई है, जबकि देश का कुल निर्यात बढ़कर 67 अरब 79 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। इस दौरान आयात में 31% की वृद्धि हुई और 60 अरब 30 करोड़ डॉलर से अधिक का वाणिज्यिक निर्यात हुआ। अप्रैल महीने में कारोबार घाटा 20 अरब डॉलर पर पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 15 अरब 30 करोड़ डॉलर का कारोबार घाटा हुआ था। आलोच्य अवधि में पेट्रोलियम और कच्चे तेल का आयात 87.5% बढ़ा, 20 अरब डॉलर पर पहुंच गया। कोयला, कोक और कोयले की ईंट का आयात बढ़कर 4 अरब 90 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। हालांकि स्वर्ण आयात में 72% की कमी आई और 1 अरब 70 करोड़ डॉलर का सोना मंगाया गया। इस दौरान इंजीनियरिंग सामान के निर्यात में 15.4% की वृद्धि हुई। पेट्रोलियम उत्पाद का निर्यात 113% बढ़कर 7 अरब 70 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया। पुनीत जी, हम जो आयात निर्यात के आंकड़े हैं वहां आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे और समझना चाहेंगे कि किस तरह, यानी किस दिशा में जा रहा है हमारा निर्यात। देखिए, अगर आप पूरी फिगर्स को ध्यान से पढ़ें तो हमारे को अगेन जो ट्रेड डेफिसिट में, जो ट्रेड में जो इंपोर्ट्स में हमें ज्यादा हर्ट हो रहा है, वो क्रूड ऑयल जो 87% इंपोर्ट बढ़ा, और कोल इंपोर्ट्स, अगेन एनर्जी इंपोर्ट्स, वहां पर जहां हमारे रिक्वायरमेंट थी पावर प्लांट्स के लिए और इन सब चीजों के लिए, तो वहां हमारा ज्यादा इंपोर्ट्स हमें करने पड़ रहे हैं। और एक्सपोर्ट्स जो हमारे बढ़ रहे हैं, जो रिफाइंड, जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, इंजीनियरिंग गुड्स हैं, रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, वहां हम एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा डायरेक्शन है। ये भी हम याद रखें कि हमारे साथ जो इंडिया में हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करते हैं, वो बहुत अच्छा लेवल है। करीब 350 अरब डॉलर का हम सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट करने लगे हैं भारत से। तो इस प्रकार से मैं देखता हूं तो मुझे उम्मीद रहती है कि हमारी कोई इकोनॉमी को इससे बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। बट डेफिनेटली जो मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट्स हैं वो हमारे बढ़ रहे हैं, और जो हमारे रॉ मटेरियल इंपोर्ट्स हैं, पर्टिकुलरली ऑयल एंड कोल, वहां हमें ज्यादा मैं कहूंगा प्रॉब्लम आ रही है, और वहां हमें जरूरत है ध्यान देने की, और वहां हम कैसे उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ये हमें एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन डेफिनेटली देखना होगा।
श्रोताओं, यहाँ पर हम लेना चाहेंगे एक छोटा सा विराम के बाद फिर से होंगे हाजिर लेकर कार्यक्रम मार्केट मंत्र। बने रहिए हमारे साथ। उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम मार्केट मंत्र में। आइए अब चलें वैश्विक बाजारों की ओर। सबसे पहले एशियाई शेयर बाजार, जहां आज प्रमुख बाजारों में लिवाली तेज रही। निवेशकों की सक्रिय भागीदारी से हांगकांग का हेंग सेंग सूचकांक 2.7% ऊपर आ गया। जापान के निक्की 225 में 2.6% की वृद्धि हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 1% लाभ में रहा। दक्षिण कोरिया के कोस्पी में 2.1% का उछाल देखने को मिला। उधर सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स इंडेक्स 0.8% लाभ के साथ बंद हुआ। यूरोपीय शेयर बाजार की ओर चलें तो वहां भी लिवाली चल रही थी। अंतर्दिवसीय कारोबार में लंदन का FTSE 100 और फ्रांस के CAC 40 दोनों सूचकांकों में 1.5% की वृद्धि समाचार तैयार किए जाने तक बनी हुई थी। जर्मनी का डैक्स 1.2% ऊपर कारोबार कर रहा था। Briefly, Puneet, what's your take on Hong Kong's currency and its linkage to cryptocurrencies, Bitcoin and the Japanese yen? Just your brief comments on this. So clearly, cryptocurrencies are in a huge tumble right now. The confidence is very low, and couple of currencies actually they have been wiped out completely. And NFTs, some of them, they've fallen by almost 100%. So they've become worthless. We know stablecoin is almost practically zero. Terra USD is practically zero. So and stablecoin is actually pegged to the US dollar at $1. And that peg was broken, and the currency had a huge tumble. So clearly, the whole idea that hard currencies can actually be linked to cryptocurrencies in some way, and they offer some kind of a safe haven investment for investors. I think that has been challenged very seriously in the last few days. Going forward, I would say cryptocurrencies are going to face a huge credibility challenge. People will not find comfort investing in the cryptocurrencies. And my own sense is that this is a time when we will relook at how the whole regulation issue about cryptocurrencies will evolve. Overall, I think cryptocurrencies, the entire gamut of cryptocurrencies is going to face major relook by investors, and probably we'll see this whole thing being recast in days to come. Well, let's have a look at the U.S. Stock markets now. On Wall Street, key indices ended mixed yesterday as investors juggled signs of peaking inflation with fears that it could remain elevated, prompting ever more aggressive tightening from the Fed Reserve. So the Dow Jones Industrial Average fell 104 points, 0.3% to end at 31,730. The S&P 500 lost 5 points, 0.1% to close at 3,930. But the Nasdaq Composite gained just 7 points to 11,371. The U.S. Fed Reserve Chairman Jerome Powell said Thursday that he could not guarantee a so-called soft landing that tempers inflation without pushing the economy into recession, reaffirming the Fed is likely to raise rates by half a point at each of its next two meetings. Meanwhile, earnings season is nearing the final stretch, and according to the most recent data, 79% of the S&P 500 companies which have posted results delivered better than expected earnings, according to Refinitiv. Puneet, your brief take, apart from what's happening with the U.S. Federal Reserve and their monetary policy and so-called tightening of the money supply, how do you see the corporate profitability of the top U.S. companies linked to the U.S. growth story and lowering inflation there? So, Arjun, in fact, if you look at the corporate earnings, they have been very impressive across the world. And even in U.S.,
the corporate scorecard has been very, very, very good. Companies have come out with very handsome profits. In fact, most of the profits are above market expectations. And yet, I think the concern is about soaring inflation and the fact that US Fed will raise interest rates, they will reduce liquidity, which will hurt the profits going forward. So market is right now looking at whether the economy will continue to grow for the next after 1 or 2 quarters or not. So I think we are all focused on what is going to be the earnings next year rather than the numbers that are coming out right now. However, I think markets are kind of okay. They're welcoming the earnings, but right now they are not focused on current earnings. They're looking at what's likely to happen 6 months from now or 1 year from now. पुनीत जी, यहाँ पर एक तकनीकी सवाल समझना चाहेंगे हम आपसे, उसका जवाब कि ये जो हम कंपनियों के बहुत अच्छे परिणाम देख रहे हैं, बेहतर परिणाम देख रहे हैं, ये व्यापक आधार पर बृहत जो छोटी बड़ी कंपनियां हैं उन सबों में देखने को मिल रहा है, या जो बड़ी कंपनियां हैं उन्हीं में हम ये बढ़ोतरी देख रहे हैं? मनोज जी, इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तो ये पूरा ब्रॉड बेस्ड है. ये सभी कंपनियों में ज्यादातर हम देख रहे हैं कि अर्निंग्स बेटर आई है, और उसका मुख्य कारण आपको बताता हूं मैं, वो है कमोडिटी प्राइस इंक्रीज. इनफैक्ट होता यह है कि शुरुआती दौर में जब भी इन्फ्लेशन आता है तो उसका असर, उसका फायदा सभी कंपनीज को होता है, क्योंकि सब कंपनीज के जो रियलाइजेशन हैं यानी सेल्स वैल्यूज हैं वो बढ़ जाती हैं इन्फ्लेशन की वजह से. और लेकिन आगे जाकर यदि वो इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है तो जो परचेजिंग पावर है कस्टमर्स की वो कम हो जाती है, और इसलिए लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से हमें नुकसान होता है. हालांकि शॉर्ट टर्म में देखा गया है कि इन्फ्लेशन से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है कंपनीज की. और इस बार भी हम यही देख रहे हैं कि ब्रॉड बेस्ड लेवल पे अगर आप भारत में भी देखें तो करीब सभी कंपनीज के जो रिजल्ट हैं वो बेहतर आए हैं. पर वही चिंता है कि आगे जाकर अगर ये इन्फ्लेशन परसिस्ट करता है तो शायद ग्रोथ में काफी असर पड़ेगा. Moving on to the oil market. Now, global oil prices rose today as worries about inflation in China's COVID lockdown slowing global growth offset concerns about dwindling supplies from Russia. So, Brent crude futures rose by 85 cents to trade at $108.30 a barrel. U.S. crude futures climbed 64 cents to $106.77 a barrel. Puneet, I remember last week when we asked you about what's happening on the oil market, and you told us that once again the monopolistic oil suppliers have tightened supply, they haven't loosened it, and that's the reason why oil prices continue to remain high. So what's the global response to rising oil prices, or is it in corporate interest not to do so? No. I mean, I think right now the whole market is in a tight spot. See, we can't diversify oil sources very quickly. In fact, Europe wants to reduce its dependence on Russian oil and gas, and they're trying to do it. And that might take a year or so for them to have a credible alternative to Russian oil. So right now they're in a tight spot. They're trying to do it. My own sense is that going forward we will see the oil suppliers getting hurt by the kind of weaponization they have done of oil prices right now. So long term they will definitely get hurt. OPEC will definitely get hurt with it. But at present, of course, they're reaping the benefits. The short term the prices have gone up. They're all raking in money. In the long term, the world is looking for alternatives to oil. But that will take a few years, I guess. अंत में सर्राफा बाजार. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून अनुबंध वाले सोने का मूल्य आज 0.1% घटा 50,122 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आया. उधर जुलाई अनुबंध वाली चांदी 0.4% बढ़कर 58,987 रुपए प्रति किलो के स्तर पर पहुंच गई. और यहीं पर श्रोताओं की ओर से पुनीत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत धन्यवाद मनोज जी. And before we close, a reminder of the headlines. At the stock market, Sensex erases all its gains to end 137 points lower. Nifty loses 26 points. Rupee weakens by 4 paise against the US dollar. State Bank of India's quarterly net profit jumps 41% to 9,114 crore rupees. And country's merchandise exports rise nearly 31% in April. Trade deficit widens to over $20 billion. And that's it in this edition of Market Mantra for now. Goodbye. Market Mantra. Market Mantra.